Namaskar and good afternoon, ladies and gentlemen. The People Stage once again welcome Honorable Central Minister Shri Ashwini Kumar Chaubey, our esteemed guest, distinguished panelists, speakers, scientists, respected scientists, and all the delegates to the inauguration of the People Stage, followed with the first live talk conclave on climate and environment. To inform you, ladies and gentlemen, People Stage going further will be organizing conferences, live talk show, which are relevant to the times, and recognizing people and nominating them for the award and providing the platform for networking and discussions. With these words, ladies and gentlemen, I once again welcome you to the very first live talk panel discussion of the People Stage. My name is Priyanka Jha, and I am founder of the People Stage. And now as we move into the panel discussion, obviously there's so much to talk about, all these gentlemen who are sitting here right now with us. If I have to talk about them, it might take a long while, so I've really tried to keep it brief, so please bear with me. So to start with, on my extreme, obviously the gentleman who started the presidential address, Professor Srinivasan. He's done his BTech from IIT Madras in 1969, MS from State University of New York in 1971, and PhD from Stanford University in 1975. His research interests include double diffusive convection, monsoon models, monsoon variability, simple climate models, and satellite meteorology. From 2009 till date, he is the chairman of the Divecha Center for Climate Change, IISC Bangalore. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Professor Srinivasan. Next up, we have Dr. Ajay Kumar Jha. He's been an entrepreneur, an educator, science and tech-based startup mentor, Fortune 500 advisor, an economic development consultant with more than 25 years of experience creating strategies to help organizations to foster their cross-functional collaborative partnership with critical stakeholders. For 10 years, he's been working as an advisor in Israel, India, and faculty for 14 years in the USA. Dr. Jha has led several climate resilient projects, which include areas in climate, agriculture, biotech, and higher education, including farm-to-market enterprise value chains in South Asian, African, and Central South American countries. We are so privileged to have Dr. Ajay Kumar Jha amidst us this afternoon. Next up, we have Professor Ramchandra. His research areas include energy, wetlands, soil and water pollution, GIS and remote sensing, and environment education. He has several publications done independently and in collaboration with several distinguished scientists from across the world. In 2017-18, he was awarded the Karnataka Parisara Award, which is awarded to people who have done active work in the field of environment protection, and this was conferred to him in the year 2017-18. Ladies and gentlemen, your hands together for Dr. T.V. Ramchandra. Next up, we have Mr. Divyanshu Verma. He's been the co-founder of Redinant Innovations and Karabaka Ventures. He's an alumnus of IIM Bangalore, IIT Delhi, and BHU with more than 21 years of experience in technology, R&D, business strategy, cybersecurity, networking, hardware, and software, and you name it. He served at leadership and technical positions in Intel, Broadcom, Ericsson, Dell. He's co-inventor of 3 patents and has co-authored papers in IEEE. He has also co-authored a book, Emerging Dimensions of Business Management. He was recognized as one of the change makers of Asia at Phoenix Literature Fest in 2022. For his social contributions in his home state, Bihar, Divyanshu was conferred the Bihar Pratibha Samman in 2017 and Bihar Pravasi Samman in 2019. Ladies and gentlemen, Mr. Divyanshu Verma. And I kept the introduction of our chief guest this afternoon till the end. So last but definitely not the least, we have Shri Ashwini Kumar Chaubey ji. He is the Minister of State for Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Environment,
forest and climate change, and a member of the 17th Lok Sabha. He is an Indian politician belonging to the Bharatiya Janata Party. Chaube ji is a veteran politician from state of Bihar and elected to the Bihar State Legislative Assembly for 5 consecutive terms. Now that's some achievement. 5 consecutive terms. He was accredited to have built 11,000 toilets for minority and below poverty line families under the Swachh Bharat mission. His slogan, "Ghar ghar mein ho शौचालय का निर्माण, तभी होगा लड़की बिटिया का कन्यादान," was a huge hit in Bihar. लड़की बिटिया नहीं, लाडली बिटिया. My apologies. Ladli. So let me repeat that again once more. So घर घर में हो शौचालय का निर्माण, तभी होगा लाडली बिटिया का कन्यादान. Can we have a round of applause for that one? It was a huge hit in Bihar, and people from all castes and religions availed the government-provided subsidies to build toilets in their respective home. It's an honor for us to have Shri Ashwini Chaube ji amidst us this afternoon. A round of applause for him. And now, after this somewhat brief introduction, it's time for us to have the panel discussion. And along with me, it will be co-hosted by Priyanka as well, Priyanka Jha. Dear panelists, our motive behind the panel discussion is to understand the importance of climate and environment change, generate ideas on improvement side, and create awareness among public to understand its importance. So keeping this as a note, let's start with the discussion. My first question to Honorable Shri J. Srinivasan ji, Senior Scientist, IISC. Sir, can you please tell us in a layman language so that the common public could understand what is climate change? All of us know about weather. Weather is something we know because every day when we decide in the morning what clothes to wear, we know about the weather. Climate is the long-term change in the pattern of the weather. Okay? There are more number of hot days now in North India compared to 100 years back, more number of heavy rainfall days. These are examples of transition of weather patterns over the long term. And this is caused primarily by the increase in carbon dioxide from around 280 parts per million in 1850 to 420 parts per million this year. So this is a slow change, so sometimes we don't see it, but it is happening. Spring is coming earlier, and patterns of rainfalls are changing. And to recognize this, you need a lot of high quality data from satellites and other technical devices to discern it. But this is something which is going to affect all of us, especially those of you who are young, going to see more and more of this change in the next 50 years. Thank you. Honorable Senior Scientist, IISC, TV Ramachandran ji. So could you differentiate if it is a climate change and not a weather's natural phenomenal act? I see that people usually consider climate change as a hoax. Can you explain this? Well, the study what we have done, see, I work in Western Ghats. There is a large scale land use changes have happened in the Western Ghats. Today, in the Western Ghats, we have only 18% the forest cover. So now when you look at the likely scenario is that is going to be in 2033 or 2035, we are likely to have about 15% of the forest cover in the region. And what is more interesting outcome of our study is that there is a likely increase in 0.5 degrees Celsius temperature, and the number of rainy days, is going to come down. It's the rain which is supposed to be spread across 45 to the days to 6 months, in Kerala 6 months. Now it will come in few days. Then you will have a recurring instances of floods, and following that you will have drought. That's what happened in 2018 at Kodagu in Karnataka and in Kerala. It led to the large scale landslides and mudslides, etc. The change in rainfall pattern, the high intensity rainfall, and when the farmer wants rain, he won't get the rain, and when he doesn't want, if it rains, like during the harvesting period, then only the farmer will understand the implication of the changes in climate. Of course, people sitting in cities, there can be cynics saying that there are no changes are happening in the system, but changes are happening in the system. Now if you look at
what is happening, you know that the last 1 week, if you have noticed, what has happened in Bay of Bengal or in Arabian Sea, quite often we see the depressions happening. So it was not there earlier. Historically, if you look at that, it is now the recurring instances are happening. So that means the changes are happening. We need to understand the changes, and more importantly, we have to come up with the mitigation measures. Otherwise, we are going to pay the heavy price. Today, the country is talking about $5 trillion economy. If that has to be achieved, then we need to give equal importance to the environment. And that is where I would say that we should also know what is the contribution from the environment. You know, for example, if you look at forest ecosystem in Karnataka, when we did the analysis, which we call it as the cumulative of the provisioning, regulating and cultural services, to put it in simpler word, what was 2,800 billion rupees in 2005, today the services what we get from the forest has come down to 1,835 billion rupees. That means there has been 35% decline in the goods and services provided by the forest. Now more importantly, the goods and services provided by this ecosystem has not been accounted. You know, when we talk about development, we talk about only the wellness or the wealth accumulated in the system, but we do not take the degradation cost. That has to be accounted in the system. Now if you look at the net present value of the forest ecosystem, what we have in Karnataka is about 79,000 billion rupees in 2005. Today the net present value has come down to the 47,000 billion rupees. This is quite worrying. So we need to take up the afforestation with the native species in a big way in the country. See, the country is going to face, not only the country, the globe is going to face a severe crisis of water. You know, my study shows in the Western Ghats, wherever the forests are there of native species, the water is there 12 months in the streams and in the wells. Where the monoculture plantation or the degraded landscape is there, water is available only for 4 to 6 months. Now if you look at how it affects the livelihood of the farmers, you know, the farmers who are in the vicinity of the native forest, if they are earning 1,54,000 rupees per acre per year, the farmers in the vicinity of the degraded landscape get only 32,000 rupees per acre per year. This is mainly because they get the water throughout the year, so the farmers can grow the cash crop. That's why the revenue is 1,54,000 rupees per acre per year. Another interesting thing that has come out of our study is the presence of pollinators. The pollinators are in abundant and diverse in the vicinity of native forest, whereas pollinators are fewer in number in the vicinity of the degraded landscape. Because of that, productivity of the crop has come down in the thing. If you look at in the vicinity of the native forest, if the farmers get the yield of 12 to 14 quintal per acre, whereas in the degraded landscape it comes down to 8 quintal per acre. This also can be attributed to the poor soil status in the system. Now today, you know, people are talking about save soil, you know, very good movement. So we need to make the soil organic. When you do the soil organic, you are enhancing the microbial activity. When you enhance the microbial activity, the nutrient from the soil gets into the plant. That's how you will have the productivity. So I would say that our concern should be to mitigate the changes in climate. We need to have the afforestation and also improve the health of the soil. That can happen only if you take up the afforestation with the native species of plants. These were the good suggestion in order to mitigate all these issues. Thank you, sir. Yeah. मेरा अगला प्रश्न मंत्री जी से है। सर, आपने अपने संबोधन में उल्लेख किया था कि एक समस्या विश्वव्यापी है, स्थिति बहुत ही भयंकर है। यदि समय रहते कदम नहीं उठाया जाए तो इसका परिणाम अगली पीढ़ी को भुगतना होगा। इस संबंध में भारत सरकार का क्या कर रही है? आज अच्छे प्रश्न आपने किया है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ प्रोफेसर जे श्रीनिवासन, टी रामचंद्र से लेकर के दिव्यांशु वर्मा और अजय झा जी सभी इन्वायरमेंटल पर्यावरण वैज्ञानिक हैं। उनके बीच में आपने मुझे भी कुछ कहने को कहा है। स्वाभाविक है, पर्यावरण की समस्या जो है ये समस्या किसी एक व्यक्ति की नहीं है,
या किसी एक राज्य की नहीं है, किसी शहर की नहीं है, ये संपूर्ण दुनिया की विश्वव्यापी ये समस्या है और किसी देश की ये सीमा से नहीं बनी है, इसकी कोई सीमा नहीं है। गगनाकर्म, गगन का आकार गगन के जैसा है, उसी प्रकार से पर्यावरण जो हमारी समस्या है वो पूरे विश्व के स्तर पर है। भारत सरकार ने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन भी निष्ठा से हमने किया है और कर भी रहे। जलवायु परिवर्तन को रोकने में जो पेरिस समझौता, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम था। भारत सरकार ने इसका अक्षरशः अनुपालन भी किया। आगे भी हम अंतर्राष्ट्रीय समझौते का पालन करते रहेंगे। भावी पीढ़ी को जलवायु परिवर्तन की जो समस्या से कैसे निजात दिलाई जा सकती है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने अभी ग्लासगो के सम्मेलन में पंचतत्व और पंचामृत की बात कही। आप जानते हैं ये शरीर क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचतत्व निर्मित या अदम शरीरा, ये पंचतत्व से बना हुआ ये शरीर है, जिसमें आकाश, पृथ्वी, पाताल से लेकर के वायु, अग्नि, जल, ये पांचों तत्व हमारे पर्यावरण के लिए और प्रकृति प्रदत्त होने के नाते ये बहुत ही उनकी सुरक्षा करना, कहते हैं प्रकृति रक्षिति रक्षिता, प्रकृति की रक्षा आप करेंगे तो प्रकृति आपकी रक्षा करेगी। मैंने प्रकृति के उस प्रकोप को, शायद यहाँ बैठे हुए बहुत कम लोगों ने उस प्रकार का अनुभव किया होगा। मैंने 2013 में, जब मैं बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री था, उस समय 100 परिवार में केदारनाथ के धाम में गया था, बद्रीनाथ। और आपको मालूम होना चाहिए कि 2013 की जो 15-16 जून की वह भीषण त्रासदी, प्रकृति के कुंदन को, प्रकृति को किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उनका जो प्रलय था, हमने वो बहुत निकट से झेला, देखा ही नहीं। मैंने 100 परिवार झेला और आधे से आधे लोग हमारे चले गए और आधे परिवार हम 3 पीढ़ी को बचा के ले आ पाए। मेरा कहना यह है कि प्रकृति को, ये जितनी चीज़ें हैं प्रकृति से जुड़ी हुई है, और प्रकृति को अगर हम छेड़ेंगे तो प्रकृति हमें कभी नहीं छोड़ेगी। आज हम देखते हैं कि बहुत, मैं जब जा रहा था केदारनाथ की घाटी में, मैंने देखा कि नदियों को बांध रहे हैं, जगह जगह नदियों को बांध करके एक ऐसा दृश्य स्थापित किया गया था। तो मुझे जाने के पहले ही मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये संदेश अच्छा नहीं जा रहा है। और सचमुच उस भयावह दृष्टि को, जो भयावह 13 का जो 15, 16, 17 की रात, 4 दिनों तक मंदिर के गर्भगृह में मैंने किस प्रकार से बिताया और कैसे आधे छूटते गए, हजारों लोग कागज की पुड़िया की तरह बहते गए। और प्रकृति का कुंदन जो ग्लेशियर था, आज आप जाएंगे तो वो ग्लेशियर आपको नहीं मिलेगा। जो 13 के उस समय जून के पहले गए होंगे, उस समय ग्लेशियर पहाड़, 2 केदारनाथ जी की घाटी के पीछे 2 ग्लेशियर पहाड़ था। उस पहाड़ का वज्र टूटते हुए, और वो टूटते हुए हमारे ऊपर गिरा जहां हम सब लोग थे। मैंने देखा कि किस प्रकार से ग्लेशियर में विस्फोट हो रहा है, टूट रहा। हम सुनते थे कि ग्लेशियर विस्फोट होता है, मैंने उसको झेला, मैंने देखा ही नहीं। छोटे छोटे मासूम बच्चे भी साथ में थे। मैंने इसलिए इस कहानी को आपको मैंने संक्षेप में कहा कि प्रकृति और जो पर्यावरण है, इसका संतुलन बहुत ही जीवन में आवश्यक है। और जब तक इसका संतुलन नहीं होगा, हम प्रकृति के चीजों को नष्ट करते जाएंगे।
अगर हम यूं ही, जैसे शरीर है, ये शरीर हमारे लिए कितना अनिवार्य है। अब इस शरीर को हमारे ये पंच तत्व जो जिससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, हम इस पंच तत्व की रक्षा करें, ये हमारे लिए बड़ा संदेश है। और सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस सम्मेलन में, जो अभी ग्लासगो का सम्मेलन हुआ, उसमें उन्होंने पंचतत्व की बात कही। और पंचामृत उन्होंने पूरी दुनिया को समर्पित किया। वो पंचामृत क्या है? उन्होंने लाइफ का मूल मंत्र पूरे समुदाय को दिया। मतलब जीवन जो लाइफ हमारा है, उसको पूरी तरह से हम जीवन जीने का जो पद्धति है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। कहते हैं आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धता जो है वो आत्मा की शुद्धि। जैसा आहार वैसा विचार। देहात में लोग कहते हैं जस खान तस पान। तो जैसा आहार करेंगे वैसा ही विचार भी होगा। इसलिए आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। तो प्रधानमंत्री जी ने जो लाइफ का मूल मंत्र पूरे विश्व को दिया है, और जो विकसित देश है जिन्होंने पूरी तरह से इस प्रकृति के संसाधनों का बहुत बड़ा दोहन करने का काम किया है, आज वो अपनी प्रौद्योगिकी को, जो हम सभी विकासशील देश हैं, वो 50 वर्ष पहले विकसित हो चुके हैं। तो आज जो डेवलप्ड कंट्री है वो हमें बार बार इस बात का दबाव देती है कि आप ये बंद करो, वो बंद करो। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से कार्बन का उत्सर्जन और जिस प्रकार से पूरे इंडस्ट्रीज की बढ़ावा देकर के जो उन्होंने एक कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी का जो प्रयोग करके उन्होंने पूरी प्राकृतिक आपदा को छिन्न विछिन्न कर दिया। और इसलिए हमारे यहाँ जो जलवायु परिवर्तन का, उसको रोकने में हम तभी सक्षम होंगे जब हम इन पंच तत्व की रक्षा करेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगे जो कहा है कि इसके लिए सतत जागरूकता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हमें करना है तो सस्टेनेबल अवेयरनेस की जरूरत है, सतत जागरूकता। तो मंत्री जी, हम क्या कर रहे हैं अभी? मैं देखती हूँ कि हमारे भारतवर्ष में खासकर 90% जनता अभी भी क्लाइमेट और इन्वायरमेंट के उस इम्पोर्टेंस को नहीं समझती कि ये भी एक ऐसा मैटर है जो काफ़ी, मतलब हमें आगे भविष्य में अगर हम इस पे ध्यान ना दें तो ये बहुत बड़ी एक समस्या हो सकती है। तो हम, भारत सरकार ऐसी क्या जागरूकता अभियान चला रही है जिससे लोगों के बीच इसका? आपने ठीक कहा। मैंने कहा कि सतत जागरूकता की आवश्यकता है। पीपुल्स अवेयरनेस एंड पीपुल्स पार्टिसिपेशन, लोक सहभागिता। केवल जागरूकता ही नहीं, लोगों को जगाना और लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना। लोक जागरण, लोक सहभागिता, लोक सेवा, तब होगा लोक कल्याण जी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस देश में जो प्रकृति की पूजा होती रही है, आप सब जानते हैं कि नदी की, वृक्ष की पूजा हमारे यहाँ होती है, नदियों की पूजा होती है। आज नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, आज नदियाँ पूरी तरह से हम कह सकते हैं जगह जगह समाप्त हो रहा है। और हमने, भारत सरकार ने अभी 13 नदियों को नमामि गंगे, गंगा के अतिरिक्त जो हमारी बहुत सारी पवित्र नदियाँ हैं, गंगा, सिंधुश्च कावेरी, यमुना च सरस्वती, रेवा महानदी गोदा, ब्रह्मपुत्र पुनात्मा, ये जो 13 नदियाँ हैं, भारत सरकार ने उसको पर्यावरण मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय ने संयुक्त रूप से अभी हमने 2 माह पहले ही उसका डीपीआर बनाने का निश्चय किया। 49,000 करोड़ का ये डीपीआर तैयार हुआ है और इस पर हमारा काम शुरू हो गया है। तो पहला तो हमें जल के प्रदूषण को रोकना, नदियों की धारा को ठीक करना और नदी के किनारे स्वच्छ
जल, और तभी जब हम कहते हैं निर्मल धारा, उसको निर्मल धारा बहने दो, स्वच्छ किनारा और किनारे को स्वच्छ रखना, स्वच्छ किनारा निर्मल धारा, तो वह जल का अविरल बहने की जो रफ्तार बंद हो गई थी, जिसके कारण प्रदूषण हो रहा था, तो जल को अविरल लगातार बहना और किनारे को जो हमारा नदी का किनारा है वो पूरी तरह से समाप्त हो रहा है। तो उस किनारे पर भी हम पेड़ पौधे इत्यादि, मतलब ये बहुत बड़ी योजना है। तो ऐसे पवित्र नदियों को बचाना, नमामि गंगे का जिस प्रकार से काम चल रहा है, उसी प्रकार से इन 13 नदियों को उसके चतुर्मुख विकास के लिए हम सब लोग प्रयत्नशील हैं। जहाँ तक नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इस समस्या के निराकरण के लिए चतुर्दिक प्रयास किए जा रहे हैं, चौतरफा प्रयास जिसको हम कहते हैं, और उसमें उच्च तकनीकी के द्वारा जहाँ हम राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कर रहे हैं, वहीं बड़े पैमाने पर फॉसिल्स ऊर्जा का भी प्रयोग कम से कम करने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रीय राज हम बना रहे हैं, आवश्यकता है, यातायात की बहुत जरूरत है हमें, तो वही जो फॉसिल्स ऊर्जा का प्रयोग है उसको कैसे कम करना, और उस दृष्टिकोण से सौर ऊर्जा के लिए हमने व्यापक योजना बनाई है। और हिंदुस्तान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पूरी दुनिया में ये लगभग 5वां देश, चौथा से 5वां देश आज हिंदुस्तान को माना जा रहा है। हमने सौर ऊर्जा पर बल दिया है और पूरी तरह से एक सूर्य, जो मोदी जी ने अभी वहाँ कहा, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, जिस पर वहाँ के यूरोप के प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड 1 नरेंद्र मोदी। यानी भारत के बारे में जो यह लोगों के अंदर धारणा है कि अगर भारत कुछ बात को कह रहा है, पहले दुनिया जो कहता था वो भारत सुनता था, अब भारत जो कह रहा है वो दुनिया सुन रही है, ये सबसे बड़ी बात। तो हमारा विश्वास है कि जहां एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड की बात हम लोगों ने कहा है, ई वाहनों का प्रयोग यह जो है हमने उसका शुरू कर दिया है और उसके लिए पूरी योजना बनाई है परिवहन मंत्रालय के साथ बैठ करके। और ये पहली बार, आगे अभी एनवायरमेंट डे मनाने वाले 5 जून को, पहले भी मनाया जाता था, लेकिन अब हम लोगों ने उसको प्रयोग के तौर पर नहीं बल्कि धरातल पर उसमें जितने भी हमारे विभाग के लोग हैं उन सब के साथ 5 जून को एक व्यापक पर्यावरण दिवस का बनाने की योजना है। तो आपकी जानकारी के लिए, और इसका जो ई वाहनों का प्रयोग और इस तरह का जो भी चीज़ें आपको दिखाई पड़ रहा है, हम उसको काफ़ी अग्रसर होकर कर रहे हैं। पहले की सरकारों में पर्यावरण दिवस एक रस्म अदागी होता था, लेकिन अब हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर बिंदु पर एक एक क्षेत्र से, एक एक विभाग से उसके बारे में, तो इसलिए पर्यावरण दिवस को एक जन जागरूकता दिवस के रूप में, एक जन आंदोलन के रूप में, एक जन अभियान के रूप में हम उसको चलाने वाले हैं। और इस बार भी हमने पर्यावरण की जो योजना बनाई वो पहले से बहुत भिन्न है। इस बार के आयोजन में केवल पर्यावरण मंत्रालय ही नहीं, मैंने पहले कहा कि कई मंत्रालयों को शामिल किया गया। हमने 7 सितंबर को, जब मैंने जुलाई में इस मंत्रालय को हमें संभालने की जिम्मेवारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, मैं पहले स्वास्थ्य मंत्रालय में काम देख रहा था, तो उन्होंने कहा भाई अब तो मनुष्य का स्वास्थ्य कोविड के कालखंड में हम सब लोग जानते हैं किस प्रकार से ऑक्सीजन के कारण हमारी छटपटाहट रही। तो बोला अब तो मनुष्य का स्वास्थ्य देखते थे, अब प्रकृति का स्वास्थ्य देखो। तो मैं प्रकृति के स्वास्थ्य को देख रहा हूँ, पर्यावरण की रक्षा कैसे हो। और 7 दिसंबर को हमने कहा था स्वच्छ पवन नील गगन, ये जो एयर पॉल्यूशन की बात हो रही है, तो हमें अगर स्वच्छ पवन और नील गगन, ये नारा मैंने दिया नहीं बल्कि एक संकल्प है। जैसे घर घर में हो शौचालय का निर्माण, तभी होगा लाडली बिटिया का कन्यादान, ये नारा नहीं था,
ये एक संकल्प था जिसको मैंने 2008 से लेकर 3 साल तक ग्राम गौरव यात्रा के दौरान बिहार में गांव-गांव में जाकर के और श्रमदान करके, हमने श्रमदान करके उन गरीबों का, उन लोगों को उनका साथ लेकर के और सब मिल करके, एक साथ मिल करके हम सब लोगों ने उस काम को अंजाम दिया। 11,000 श्रमदान के कारण शौचालय बना। यूँ तो उस समय 33 लाख शौचालय, हमने बिहार सरकार में, हम पीएचडी मंत्री के रूप में थे, तो 33 लाख शौचालय 3 साल में बनवाए थे। लेकिन श्रमदान करके 2 घंटे का श्रमदान हमारी यात्रा में, और वो 3 महीने का लगातार बीच बीच में रुक करके, और श्रमदान से गरीबों के घर में जा कर के उनको भी खड़ा करना, कलेक्टर को भी खड़ा करना, आईजी को भी खड़ा करना और उनसे वो काम करना। इसलिए पर्यावरण की बात अकेले नहीं कोई, इसमें हम सब लोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के प्रथम पुरुषीय विचार के साथ, और जो पहले कहा गया संगच्छध्वम, संग मदध्वम, सब साथ चलो, सबके विचार साथ हो, सब मिलके चलो, तो जब तक सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास नहीं होगा, तो हम इस पर्यावरण की रक्षा करने में बहुत कह सकते हैं कि सफल होने में हमें कठिनाई होगी, सफलता मिलने में। जी। Now my question to you two entrepreneurs. People say that solar power, electrical vehicle is the future to counter dependency on coal and oil. But is it actually a practical solution? Because in any ways, to make a solar panel and electrical battery, mining is required, and mining itself is against the law of nature. Sir, two honorable senior scientists, this question is also relevant to you both as well. Please put your points if you want. So, very thoughtful question, Priyanka. Is audible, right? Yeah. So, the observations are very clear. The industry is right now going for mining, but at some point of time, there will be so much of battery and like new type of batteries and hydrogen coming that we may not have to mine. It's just a matter of time that to deal with a bigger beast called petroleum and coal, which has completely depleted our earth and created such a polluted environment, we have to take a sidetrack on this. However, the newer research, and especially the entrepreneurial mindset, which is going beyond research papers, from research paper to the product, to the consumer, and consumer are asking themselves they can pay 2 paisa more if they have to keep the environment clean, it is very, very appreciated. I also want to bring a different topic there. The next beast is coming, that is e-waste. Today we are living in a world where everything is a technology, right from my iPhone to iWatch, whatever we are calling. Now this waste was not there. This we are creating. I also request Minister Sahab that there should be a research on bioelectronics. There should be research on something which degrades. जैसे कि ये सेल फोन अगर पुराना हो गया तो इसको डिग्रेड हो जाना चाहिए, because that's the nature. और हम जो create कर रहे हैं for past 100 or whatever years, we are creating all non-degradable stuff, from plastic to the cell phone to everything we talk of. So there, before this problem becomes to the level that each of us started polluting too much, and this problem again becomes a challenge for the earth, it's important that we live more to create more of this electronics, because electronics is not going away, which is degradable. If a cell phone or a watch or a computer or a car goes out of life 15 years, it degrades on itself. So there has a lot of potential on the entrepreneurial side and research side, which is needed to make this earth and environment cleaner. So I can tell you, environment side, entrepreneurs are very, I will say, agile. They are thinking that yes, we are right now digging out lithium ion, but at some point of time this has to stop. The energy has to come from like hydrogen or some other source, solar, but this will go away, Priyanka. Thank you. Request you to please put your point on the same. I think there is nothing called one solution, and this is not one person or one society or one country can do. It is for everyone in the world. Since if you look at the COVID has created world closure. Look at the war, which is the Ukraine war. Put every country on foot right now. Look at the climate change, where
Every scientist was talking about it for a long time. Never we imagine our life that Texas will have a frozen nights and there is no water supply and people cannot live without water. So things are changing very fast. And so everybody's responsibility right now. Entrepreneur is a very important because they need to design, develop, experiment, research, bring new product and new innovation, which can deal with not only one aspect of technology, which is a smart mobility, where you look at the transport from the road transport until the biofuel, which air fuel is going to be used, but also in terms of water, energy, food, every sector needs that because it is not going to be one person job. The way we have developed this world, which is like a monolithic world, am I correct? The developed country decided what you are supposed to do because I will dictate you the terms, you come with my terms because you don't know what to do, okay? Because we know what we damaged. So I always advocate this, you're a part of the problem, you should be a part of solution. You cannot dictate, rather you work together as a one team, one mission, one world, one planet, Earth, which is the only living planet in the world. Because you cannot survive if you cannot protect this Earth. We are choking it. So I will talk about the entrepreneurial side of the world. I run a center, which is called, it's basically the center which is a FabTech venture. I run in Colorado, which is a food, agtech, and biomaterials. So we are developing everything which is going to be reused, recycled, biodegradable, every material, whether it is a building, whether it is a road, whether it is, aviation industry, whether you're manufacturing, whether you're using the chemical, no, it's a natural chemical. So there is a lot of startup. So since this is IISC Bangalore, which is, the nation, and from this place we had Sienna Rao, Dr. Sienna Rao. So we had collaboration with him also. His student, Dr. Mani, was a PhD, and his PhD is all over the world. You just name it. And we talk about everything fixing the biomaterial. We fix the natural material. So this is all entrepreneurial world. This is our responsibility to make sure that everyone student who is coming out of the college, bringing a new innovation, think all around yourself. What is the damaging our environment and our earth? I started a motion in Colorado, which is called Green Footprint. It's an innovation garden. We trap carbon of the entire city to create a forest. So city is created in a forest. This Bangalore city developed around forest. But those city which was developed, you need to create a forest inside. So there's a campaign is going on, which I'm also leading. It's called Billion to Make Million. One side, where we need a lot of entrepreneurs like this. We don't want only Elon Musk. We want also, the small Musk, middle Musk. But at the same time, we would like to have every one individual put 100 plants wherever they live. Whether you have a small balcony or you have a small house, you put 100 plants all around you, and this will create, if 100 plants in 140 crore in India, you just multiply that. So this is our new mantra, make this earth a better place to live, grow and prosper together. That is what the world mission would be. Ladies and gentlemen, I would say that People's Stage is an honest effort. Effort of several people around and few not present here. I deem it a great honor and privilege to propose thanks on this memorable occasion to all who made it possible. First and foremost, I thank our chief guest
Honorable Central Minister Shri Ashwini Kumar Chaubey ji, Minister of Environment, Forest and Climate Change, who despite his busy schedule has found time to grace this occasion. And I express my heartfelt thanks to respected Shri J. Srinivasan ji, distinguished scientist, IISC, Bangalore. Respected Shri T.V. Ramachandran ji, scientist, IISC, Bangalore. The senior advisory team member of the People's Stage, Dr. Ajay Jha and Divyanshu Verma, for their contribution and their able guidance. Mr. Swaraj Sinha, Chairman of Bihar Foundation, for his words of encouragement. I owe special gratitude to Suman, who developed the website, Manasi Sarma, who gave life to People's Stage website with beautiful and meaningful content, and also blog. I thank Prasuta Foundation Chairman Asutosh ji, Secretary Mahesh ji, Kripa Sankar ji for the support, Abhishek for his support for the launch of the website, and thanks for everyone supporting me and make this happen.